अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम समर हसन है और मैं फाउंडर हूँ एपिफनी की। आज अगेन हम वापस आ गए हैं एपिफनी टॉक्स नंबर 10 के साथ। और आज का जो सेशन है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम एक तो नंबर 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हेल्थ, जो कि हम सबको अफेक्ट करता है। और दूसरा ये कि आज मेरे साथ एक को मॉडरेटर भी शामिल हैं जिनका नाम है मौज़मा जाहिद। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तानी women in computing and she's also working for Microsoft. So without much ado, I'm just going to invite her to the virtual stage. Assalamu alaikum Azma, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम Samar, how are you? Very well, thank you. So thank you so much for doing this together with me. I think I'm super excited. हम इतने दिनों से LinkedIn और WhatsApp पे messages भेज रहे होते हैं एक दूसरे को. Finally, we're seeing each other. Yes, I'm super excited about this session today. Yep. Would you like to introduce our next guest? Yes, so our very first guest is actually Fahad Aziz. He is the co-founder of Caremerge, a digital health company ensuring the aging experience is filled with peace of mind and joy. Caremerge is named one of the Inc. 5000 list of fastest growing companies in the US, and it has raised $20 million in funding by major healthcare investors around their investing. He is also a contributor to Forbes covering digital health. So without further ado, welcome Fahad. Hey, thank you Assalamu so alaikum much. Fahad, कैसे हैं आप? Walaikum salam. I'm doing very well. Thank you so much for having me on this presentation. Absolutely. We're Thanks delighted. thank you. And thanks for the kind introduction, Mosma. So I'm Fahad Aziz. I'm a co-founder of a healthcare startup, Caremerge. We started this 6 years back, and I'll share my story how we went into this startup business. Um, in addition to leading this organization, I also write for Forbes magazine, and I cover technologies that are related to healthcare and the future of healthcare and the crossroads of how the future trends and technologies will impact healthcare. So I write about them, at least try to publish one article a year. It takes a little while to do the research. Um, in addition to that, I also teach students and entrepreneurs at Berkeley University. So every year I have a class. We talk about how technology can help in wellness and aging population. So I'm very excited to be here. I love Berkeley. It's so beautiful. That's awesome. Yes, You sir. know, Yes, sir. yeah, I'm just honored to be part of that organization and meet with some very talented students every year. So very excited to be here and talk more about my journey and talk about some other things that I see in the market. Thank you so much, Fahad, कि आप हमारे साथ आज हैं. Last but not least, we've got Shahrukh Babar, जो कि co-founder हैं Xylexa के, और अभी recently Xylexa has raised its investment as well, first angel investment. So we're super excited. Assalamu alaikum Shahrukh, कैसे हैं आप? Walaikum assalam, Samar and Mozma. Thank you so much for inviting me and providing me this platform so I can share my experience and particularly like how we can support entrepreneurship, particularly encourage the people in healthcare. So usme kya hoga, it will be very helpful. So let me introduce myself. My name is Shahrukh Babar. जो मेरी डिग्री है which is in bioinformatics. उसके बाद जो मेरी expertise है in healthcare, basically after graduation I served in the healthcare industry and where I worked with some very well-known hospitals in Pakistan. And fortunately, you can say, or unfortunately, so I was working in the oncology department. I interacted with women in the suffering from the breast cancer. And फिर उसके बाद क्या हुआ कि I also you can say experience this, you can say there कि यार ये बहुत बड़ा problem है. Then we started another company in 2014 जिसके अंदर हम लोगों ने जो है कि basically IoT के अंदर हम लोगों ने काम start किया. That was the beginning of my journey in entrepreneurship. फिर उसके बाद then we moved to Xylexa, और Xylexa के अंदर जो हमारा vision है to just to save women जो कि ब्रेस्ट कैंसर से एक जो है ना कि डेथ होती है एवरी ईयर ग्लोबली, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल चैलेंज. एंड अल्हम्दुलिल्लाह एज अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन पाकिस्तान का पहला बायोइन्फॉर्मेटिक्स R&D सेंटर एस्टैब्लिश करना पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, दैट इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट. आई विल लव टू शेयर मोर डिटेल्स अबाउट इट इंशाल्लाह लेटर.
वेरी गुड, So ठीक है। अभी हम आपसे और थोड़ा सा ना क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा, हमारी ऑडियंस की तरफ से काफी दफा रिक्वेस्ट आती है कि अगर ज्यादा उर्दू में हम बात करें, तो okay. मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिमाइंडर्स देती रहूंगी, Okay. ठीक है? अच्छा जी, सो फहद, आपसे शुरू करते हैं। कैन यू गिव अस अ डीपर बैकग्राउंड, आपकी जो कंपनी है और वो क्या फोकस करती है, उसका फोकस एरिया क्या है, और थोड़ा सा और अगर आप हमें हिस्ट्री बता दें अपनी कंपनी की। Sure. So हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है, इट्स वेरी शॉर्ट। मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेक्नोलॉजी में है, ओवर 20 years now. I did my metric and FSC from Peshawar, and I did my undergraduate from Lahore. Or when I was in my undergraduate, I got an opportunity to work with a startup. We were like 10 people at that time. But while I finished my undergraduate, वो जो startup था वो बहुत successful हो गया. It went public on NASDAQ. We went from 10 people to 300 people in just like 2 years. So it was a good learning experience for me. लेकिन it also sort of gave me an idea कि companies or startups बनाना बहुत आसान है, right? Because that's all I knew at the age of 19. कि कोई भी आप company बनाए, you can make it so big. Little I knew that that's not true. So when I left that organization, उसके बाद I moved to New York. I was working there for 10 years. And trying to follow the same footsteps, I did 2 more startups जो कि दोनों फेल हो गए। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, कंपनीज बनाना इतना आसान नहीं है, देयर इज मच मोर इनटू इट। So at that point I said, no more startups. Better I could just focus on my job and just do what I do best. Like, then came a point in my life that we were thinking about buying a house. And I talked to my wife and said, listen, if you buy this house, we will be in mortgage for 30 years. और इसके बाद कोई चांस नहीं है कि हम लोग या मैं कोई स्टार्टअप कर सकूं. So give me one more chance. I'll make sure कि इस दफा फेल ना हो, or I will not repeat the previous mistakes. So obviously she was very supportive. She said, okay, let's hold on our plans for the house and let's try it again. So this time, the third time when I did it, I came up with this idea, okay, it's gonna be full time. I'm gonna quit my job. I'm gonna quit the city. I'm not gonna be in New York. I'll do it from scratch, ground up. So I left New York. I went to Chicago, and I had a really great idea. This is 2012, 2013. So me and my co-founder had a great idea. Okay, let's build a Facebook for healthcare. So if you remember, for a few years back, Facebook was getting popular. Everyone was signing up. आपके parents भी उसके ऊपर थे, grandparents, everyone was signing up. So I thought, अगर सब लोग Facebook को यूज कर रहे हैं, why don't I build Facebook for healthcare, right? तो इसी आइडिया के ऊपर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी and started working on it. And 2 months into it, we realized again it's a really bad idea. Because no one wants to talk about their sickness. No one wants to talk about the medications they are taking. And let's talk about it. They don't want to share it with their family members or friends, right? So really bad idea. तो अब जॉब छोड़ चुके थे और अब कुछ करना था, there was no going back. So we started looking at ideas के और क्या कर सकते हैं, how we can pivot into something more important. So healthcare was the focus, but we were looking at areas. So उसमें हम लोग गए hospitals में, हमने देखा, we looked at the doctors' offices. There was a lot of noise, a lot of technologies that were there. But we had a very interesting experience. We got an invitation to visit a senior home, a retirement home, जहाँ पे people age 80 plus were living. So it's very much like a hotel, but all the guests are 80 plus, and they're taken care by nurses, and there are activities managers and all that stuff who are looking after them. So we went there and we spent a couple of weeks in that community, and we saw some extreme challenges के जो families हैं वो building में नहीं है, they're far away. लेकिन जब वो हफ्ते के बाद आती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो वो बड़े they are always unhappy. उनको लगता है कि जो स्टाफ है वो ख्याल नहीं रख रहे, या स्टाफ जो है उनको टाइम पे मेडिकेशन ही दे रहे हैं, सो ऑन. और जो स्टाफ है वो इतना ज़्यादा काम कर रहे होते थे, लेकिन वो इतने बिजी होते थे कि वो फैमिलीज को कॉल करके बता नहीं सकते थे. They were so busy in doing what they were supposed to, लेकिन फैमिलीज को नहीं बताया. तो we saw a communication gap, और we realized कि इस communication gap की वजह से challenges जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं. It ends up in lawsuits जो कि फैमिली फाइल कर देते हैं communities के लिए.
तो हमने कहा कि let's solve this problem. It's a bigger problem and it can has a big impact. So this is the birth of Caremerge, and we started working on that. We built a technology platform. So what it does today is that it brings everyone, family members, doctors, staff member on the same technology, so they can see what's going on और क्या updates हैं. अगर कोई help चाहिए तो family को call कर लेते हैं and so on. So this is what it does as an engagement platform. Or it became popular over the time, as Wasma said. We were able to do fundraising. We raised like a few rounds. Started with $30,000, then 500,000, then 2 million, then 4 million, then 14 million. So over the years, we showed traction and we started to raise money. Now, as of today, there are over 500 senior communities that are using our system in 39 states, touching over 100,000 senior residents. So wow, mashallah. yeah, thank you. So ये थोड़ा सा in a background, how I got there and what it does. So lots and lots of follow-up questions coming up for you, Fahad. अभी हम आपसे पूछते हैं, especially ये जो third time's the charm वाली चीज है ना, तो we'll do a deep dive in that कि क्यों 2 दफा fail हुआ था, what are the lessons that we can draw. और दूसरी तरफ से हम जरूर ये मालूम करना चाहेंगे about what you just said, talked about fundraising, right? So I think for our audience that will be really useful. तो अभी हम follow-up questions पूछते हैं. But Mozma, what do you want to ask Shahrukh? Yeah, Shahrukh, I think switching gears towards Pakistan and your company, जैसे आपने breast cancer की बात की, 1 in 8 women, it's a stat के they would get breast cancer. So आप थोड़ा सा अपना introduction, if you can give us what this company is, what you're doing, and what are the key issues you're facing, and how you're trying to solve this particular problem, that would be great. ओके अच्छा, जिसमें से पहले मैंने बताया था कि बेसिकली मेरी जो स्टडीज़ हैं वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हैं. बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आई वाज वर्किंग इन कैंसर जेनेटिक लैब हियर, और उस पे हम लोग काम कर रहे थे कैंसर जेनेटिक के ऊपर. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या हुआ कि फिर आई स्टार्टेड जॉब इन द हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, जहाँ पे हम लोगों ने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम किया. वहाँ पे थोड़ा सा जब देखा कि एक वो जो कैफियत है ख़वातीन के ऊपर सफरिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर, और जो है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द लेट डायग्नोसिस. सो वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी करने का मौका मिला. वहाँ पे रियलाइज़ किया कि हाउ बिग दिस प्रॉब्लम इज़. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन एशिया, विच इज़ एक्चुअली वेरी अलार्मिंग, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है कि सबसे ज़्यादा जो है ना कि अर्ली स्टेज के अंदर होता है, जिसको हम बड़ा एक्टिव कैंसर कहते हैं, जो कि 25 से 35 के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारी वुमेन सफ़र करती है, जो कि अग्रेसिव फॉर्म है कैंसर की. सो ब्रेस्ट कैंसर इज डायग्नोज इन द अर्ली स्टेज. जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो आपके 92 to 98% होते हैं. अगर ब्रेस्ट कैंसर लेट स्टेज के अंदर डायग्नोज होता है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल 15 से 27% रिड्यूस हो जाती हैं, और क्योर भी बड़ा एक्सपेंसिव होता है. सो वहाँ से बेसिकली आई रियलाइज दिस आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब. देन आई स्टार्टेड माई अनदर कंपनी, जो कि हम लोग फोकस कर रहे थे IoT के ऊपर. थोड़ा सा हम लोगों ने डेविएट किया. Then I started with my two other co-founders, like as a IoT company, mashallah, and that did that company did very well. और अलहमदुलिल्लाह हमने यहाँ पे multinational companies के साथ काम किया पाकिस्तान के अंदर. And then I had to exit जो मेरी company थी, पहली company. It was not happy exit, unfortunately for me. तो उसके बाद क्या हुआ कि देन आई स्टार्टेड Xylexa, और विजन डेफिनेटली Xylexa के बैकएंड के ऊपर यही था कि यार बिकॉज आई एम बायोइन्फॉर्मेटिशियन, मुझे नॉलेज है कि यार हेल्थ केयर के अंदर बायोलॉजिकल मेडिकल टर्म्स, मेडिकल के अंदर आफ्टर फिर मैंने क्या किया कि सर्व किया हॉस्पिटल्स के अंदर, और जो मेरी अपनी एक्सपर्टीज थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI के अंदर थी. तो उसके बाद आई रियलाइज कि यार आई कैन लाइक ब्रिज बिटवीन दिस मेडिकल, क्योंकि जो मेडिकल है वो IT वालों से और IT वाले मेडिकल वालों से बहुत दूर भागते हैं. So then I realized कि यार I think I have sufficient knowledge from both sides, so I can come up in this you can say domain. तो उसमें कुछ किया जा सकता है. तो उसके बाद डेफिनेटली लाइक आई वाज अ लोएस्ट GP होल्डर जो है कि ऑफ माय ग्रेजुएशन. देन डेफिनेटली आगे पढ़ने का चांस भी कम था. सो एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इंडस्ट्री नहीं है, दैट इज वेरी डिस्करेज.
डिस्करेजिंग फॉर द पीपल जो कि अभी बायोइन्फॉर्मेटिक्स या हेल्थ केयर के अंदर आना चाह रहे थे. तो देन एक्चुअली जस्ट वी स्टार्टेड विद दिस कि यार वी शुड डू समथिंग जो कि हम ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग जो है ना कि अर्ली डायग्नोसिस के अंदर कुछ कर सकें. सो फ्रेंड एंड फैमिली के अंदर भी कुछ केसेस आए, सो जिन्होंने फिर फर्दर मोटिवेट किया कि यार मतलब दिस प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व. सो देन वी स्टार्टेड Xylexa के अंदर हम लोगों का जो मेन विजन है कि हम लोगों ने थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग पूरा एक पाइपलाइन डेवलप हम लोगों ने किया है. जो पाइपलाइन क्या करता है कि जो मेडिकल इमेज होता है जिसको हम ब्रेस्ट एक्सरे कहते हैं, वो एक्सरे को लेता है और जब रेडियोलॉजिस्ट जब एक नेकेड आई के साथ उस इमेज को देखता है तो उसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम होती है. जो स्टैटिस्टिकली लाइक यू कैन से लेस देन 70%. मिस डायग्नोसिस रेट बहुत ज़्यादा है रेडियोलॉजिस्ट का. द रीज़न इज़ द ह्यूमन आई लिमिटेशंस. ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन फटीक, ह्यूमन बिहेवियर और ब्रेस्ट आर्किटेक्चर जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है रीडिंग के अंदर, एक्सरेज के अंदर. सो एक्चुअली वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग AI टेक्निक्स जो कि हम पिक्सल लेवल के ऊपर भी है ओवर जो रिसर्चर्स हैं दे ऑल्सो आइडेंटिफाइड के कुछ पैटर्न्स हैं जिसके थ्रू हम थ्रू मशीन लर्निंग AI हम उसको बेसिकली बेहतर तरीके से डिफरेंशिएट कर सकें. सो हम लोगों ने पूरी एक पाइपलाइन डेवलप की फ्रॉम डायकॉम व्यूअर, एक फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर हमारा पैक सिस्टम एंड AI एल्गोरिदम्स. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने 90% अबव एक्यूरेसी हम लोगों ने अचीव कर दी है. टीम के अंदर डेफिनेटली वी हैव साइंटिस्ट इन AI, इन मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग. देन आफ्टर यू कैन से 1.5 year बैक बेसिकली इन कोलैबोरेशन एक US कंपनी के साथ हम लोगों ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो है ना कि R&D सेंटर बनाया है. द विजन बिहाइंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज के अभी कोई भी आप क्रॉनिक डिजीज देखें, क्रॉनिक डिजीज के अंदर जो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि सबसे पहले स्टेज के अंदर ह्यूमन प्रोफाइल चेंज होना शुरू होती है. जब ह्यूमन प्रोफाइल चेंज होना शुरू होती है तो इन सेकंड स्टेज क्या होता है कि वो बीमारी ऑनसेट होती है, थर्ड वो सिम्टम्स लेवल पे जाती है तो वहाँ पे हम उसको डायग्नोज करते हैं. सो वी आर यूजिंग मल्टाइओमिक टेक्निक जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर होते हैं. मल्टाइओमिक का मतलब ये है कि आपके DNA का, प्रोटीन का, फिजिकल एक्टिविटीज़ का, आपका जो ईटिंग हैबिट्स, ये सब डाटा के ऊपर प्रोफाइलिंग के ऊपर जो है कि हम मशीन लर्निंग AI के मॉडल्स डेवलप किए हैं हम लोगों ने, जो कि हम लोग प्रिडिक्शन ऑफ डिजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं थ्रू मल्टाइओमिक डोमेन. सो लाइक ये डोमेन्स है जिसके ऊपर हम लोग काम करें. जो मेन फोकस है हमारा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हम लोग फॉर द हेल्थ केयर यूज़ करें, ह्यूमन कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके ताकि. Great. This is बहुत शुक्रिया आपका for to give us this much detail about the company and especially आपने जो mention किया machine learning AI का use. मेरी current field भी इसी के ऊपर है. I'm using it for other purposes, but I think this is the really future of lot of this healthcare tech. So switching gears back to you, Fahad, I think आपने mention किया अपनी entrepreneurship journey को, उसके कुछ learning score, hurdle score, as हम पहले भी कह रही थी. If you can dig deep more into the involvement or the startups that didn't work or some struggles जो आपकी थी, कुछ key learnings जो आप share करना चाहेंगे लोगों के साथ, if they are thinking of building a startup, what should they focus on? उनकी क्या चीजें होनी चाहिए startup के building blocks में? I think that would be useful for the audience. Yeah, learnings तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि failures जो है they शुरू हो जाए आप. that list can go on and on. I think when I look back and the two experiences that I had, the thing that was common between the two was कि जो मेरी और जो मेरी co-founders जो team थी, उनकी commitment जो थी ना वो इफ़ी थी. इफ़ी इस तरह थी कि अगर चल गया तो ठीक है, ना चला तो we have jobs, we will be okay, right? Or अभी भी जब मैं I talk to a lot of entrepreneurs here that are working full time and they are doing some gig. They're thinking about building some technology या वो कोई ऐप बना रहे होते हैं और उन्होंने students को hire किया होता है and they spend a couple $1,000. So the question I ask them is, how much committed are you? When are you gonna quit your job to pursue this full time? And do you have a plan in mind? 12 months from now, I'm gonna quit my job and do this full time, right? If you don't have a plan, please don't waste that $5, $10, $15,000 because this is just a hobby for you, just having fun. All the time that you're investing is not gonna help. So the key is that जब भी आप सोचते हैं कि आपने startup करना है, especially if you are working full time,
you have to come up with a plan. 18 months from now, I'm gonna quit my job, and now I only have 18 months, and this is how I'm gonna. These are my milestones, and I achieve them. जब आपके पास end goal होगा ना, then you will work really hard. You will make sure कि आप उस goals achieve करें and so on. So that was the key learning. कि there needs to be a huge commitment from you and from your co-founders. और हमारे केस में ये भी था कि कुछ केसेस में मेरी बहुत कमिटमेंट थी एक स्टार्टअप में, लेकिन मेरे को फाउंडर्स जो थे वो 50-50 थे। और जब टाइम आया हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, दे फेडेड अवे। तो उस टाइम पे आई वाज लेफ्ट बाय माय सेल्फ विद अ प्रोडक्ट दैट आई कुडंट लॉन्च। सो दैट वाज नंबर 2। And it also brings the other point, which is also very important, is your team. Your co-founders, they need to be someone that you're very comfortable working with. And the experiences tell you, okay, your co-founders out there, you spend day and nights with them. And I literally mean nights because you're traveling, you probably don't have enough budget to take 2 rooms in a hotel. So you're in some cases you end up in the same room also. But you're talking to them day and night. They need to be more than your friends. They need to be someone who really believes in this mission, राइट। सो उनके और आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए जिसको हम दोनों मिलकर अचीव कर रहे हैं, राइट। तो उसमें छोटी मोटी जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दे आर इररेलेवेंट, क्योंकि आप दोनों या आप तीनों जो हैं दे आर वर्किंग फॉर ए वेरी बिग गोल, राइट। सो इट्स नॉट इजी टू फाइंड दोस co-founders, but that's key for success. And one way to find those co-founders, people always ask me, okay, how do I know that this person or is the right co-founder? So the way to जो मैं उनको एडवाइस देता हूँ वो ये कि whenever you find someone that is very interesting and who is also interested, ask them to work with you for a couple of weeks, right? And come up with some arrangement. You work for 6 weeks, we'll work together. If it works out, you like it, I like it, then we'll continue. But in that 6 weeks working together, you will find a lot about him. Okay, if he's the right person, if he likes it, he believes in the mission, there is a synergy between you two. And if that works out, then go into a formal relationship and say, okay, we worked together for a couple of weeks. I think this is going to work out, and let's engage in a formal relationship. So co-founders and the team is very important. And the third one, the last one, which I think, which we really ignored in the beginning, in the other startups, was that कि हमारा ये आइडिया था कि जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद we will figure out कि इसको कैसे बेचना है और इसको कैसे हमने कस्टमर तक पहुंचाना है, go to market हमारी क्या होगी, right? That will be an afterthought. So that's a bad idea, right? I was just talking to a young startup yesterday in healthcare, and he wanted to build this whole technology. He hired these people, and he said हम लोग शुरू में free कर देंगे, right? और बाद में we'll figure out कि कैसे पैसे बनता है, who wants to pay us. So please don't do that, because उसके बहुत नुकसान आता है. You need to first figure out who's gonna pay for your product before you write a single line of code. ठीक है? You need to talk to your potential customers. उनसे आप figure out करें कि उनके लिए इसमें इतनी value है कि they want to pay you for this, right? क्योंकि अगर आपने सारा सॉफ्टवेयर बना दिया, let's suppose आपने सारा सॉफ्टवेयर बनाया और आपने pharmacies को बेचा, ठीक है ना? And pharmacy says, we love the software but we don't want to pay for it. And then you realize that doctors want to pay for this software. लेकिन आपको software बना नहीं हुआ doctors के लिए, right? So now you have to go back to the drawing board and redesign. सारा आपको investment change करनी पड़ेगी. आपका software जब change होगा, it will not be the best software for physicians, right? So please do all that exercise before you write line of code. And the way to do it is that आप assume करें कि आपके पास सारा product बना हुआ है. Just make an assumption कि पूरा product आपके पास है आज, and go out and start talking to the customers. And उससे feedback लेना शुरू करते हैं. That will give you enough market feedback that you can decide whether you should pursue this or you should pivot and do all that stuff. So again, the point is कि जो आपका go to market है और जो आपकी business model है, it should not be an afterthought. It should be from the day you start working on your startup. So those are the 3 things we didn't do really well in the beginning, and I don't think we did really well with Caremerge, but we did a little better than before. I think we would say कि आपने a whole lot better किया है with Caremerge, right? So mashallah, hopefully it'll grow much more inshallah, and lots and lots of successes your way. So I kind of want to understand a little bit. जो startups आपके fail हुए थे,
राइट? यही जो आपने लेसन्स शेयर किए हैं हमारी ऑडियंस के लिए, इन्हीं रीजंस की वजह से फेल हुए थे या वाज इट समथिंग एल्स? या जो फर्स्ट स्टार्टअप फेल हुआ उसकी इट वाज एन ई-कॉमर्स साइट. आई बिल्ट दैट इन 2003 2004. और उसमें ये था कि जो मेरा पार्टनर था, वी वांटेड टू सेल कैमरास, डिजिटल कैमरास. अब आपको पता है कि 2003 के अंदर वो बहुत बल्कि से, मे बी some of you may not even remember, but they were like really bulky Sony and Canon I cameras. look younger than I am. Okay, I remember them. Thank you. So, But go ahead. हाँ. yeah, so I met this guy, and you can't believe, क्योंकि मैं अभी नया नया न्यूयॉर्क आया था, अभी 911 को हुए हुए कुछ महीने हुए थे. And then I met this person who was who was Jew, and he had a butcher shop in Brooklyn, right? और ये जितने भी कैमरास थे ना, ये ज्यादातर उन्हीं कम्युनिटी से लोग बेचते थे. तो what he did was that behind his butcher's shop he had a room जहाँ पे वो कैमरा स्टॉक करता था. ठीक है ना? तो we met, I don't know how we met, but we met, और उसने कहा कि why don't we sell it online together and do all this stuff. So I still remember शाम को मैं वहाँ जाता था, इतनी स्मेल होती थी उसकी. पर उसका भी वही प्रॉब्लम था, he wasn't serious, it was like a second gig. उसका जो मीट का बिजनेस था वो बड़ा अच्छा चल रहा था, right? So as soon as we launched, he started to focus more on his meat business, and it didn't work out. तो सेकंड बिजनेस, जो सेकंड स्टार्टअप हुआ, उसमें मैं बड़ा सीरियस था. उसमें मैंने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लिखवाए अपने टीम के साथ, को फाउंडर्स के साथ. मैंने कहा अब जो सीरियस लोगों के साथ काम करना है. So that was the idea कि we wanted to build a technology जो कि ट्रेडिंग कर सके, ऑनलाइन ट्रेडिंग, और खुद ही वो खरीदती थी और खुद ही स्टॉक्स को बेचती थी, राइट? और दिस इज लाइक प्री AI डेज. और हमने उसमें 1.5 साल लगा के वो पूरा प्रोडक्ट बनाया, और उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे थे. वी वर गेटिंग लाइक 53-54% सक्सेस. तो अगर इतनी भी सक्सेस हो जाए आपकी ट्रेडिंग में, तो यू प्रॉब्ली गोना एंड अप मेकिंग मनी. प्रॉब्लम उसमें कुछ टाइमिंग की भी हो गई. उसमें ये हुआ कि जैसे कमिटमेंट ये थी कि फहाद विल डेवलप द प्रोडक्ट, राइट? और जो मेरे को फाउंडर्स है, दे विल लॉन्च द प्रोडक्ट. ओके, तो आप सोचें कि 18 मंथ जब तक मैं प्रोडक्ट डेवलप करता रहा, दे हैड नथिंग टू डू, right? They were just giving me feedback. There was no investment from their side. Okay? The day we decided to launch the product, when they were supposed to get involved, उस वक्त we dealt with this 2008 financial crisis. So they all went bankrupt. उनकी कंपनी बंद हो गई. They didn't have money to pay their rent, let alone do a startup. So now I was with the product. और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि I will build the product and they will launch it, I had nothing to fall back. So from that day, I decided, this startup is not my thing. I should just focus on the job. Thank you so much for sharing all your experiences, Fahad. I think this is really, really useful. And I'm sure जब third time जब आपने किया है, तो obviously सारे lessons you're able to incorporate them, right? So similarly, शाहरुख भी हमें अभी यही बता रहे हो ना आप भी, कि you started something and then it wasn't such a great exit. So क्योंकि हम lessons, I think, so maybe let's focus on the lessons a little bit. कि क्या lessons थे आपके experience से that you can draw out for the rest of our, audience? Okay. Well, definitely, like उससे पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा उसमें फोकस करूँ. जो फहद की बात है कि जो आपके को फाउंडर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो एक चीज़ मैंने काफ़ी यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स के अंदर नोटिस की है कि वो होता है कि वो कहीं भी यूनिवर्सिटी कहीं से ग्रेजुएट होते हैं, या लेट्स सपोज कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं. 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो दोनों दोस्त हैं, दोनों बाहर निकल के वो दोनों स्टार्टअप बना लेते हैं. दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, या दोनों ही ग्रेजुएट होते हैं, एक क्लास फेलोज होते हैं, बाहर निकलते हैं, वो स्टार्टअप बना लेते हैं. दे बोथ आर द को फाउंडर्स. अच्छा, उनको कहते हैं द प्रॉब्लम इज दे बोथ आर टेक्निकल, राइट? हमें सिर्फ एक टेक्निकल को फाउंडर की जरूरत है. सही है? सो दोनों टेक्निकल हो जाएंगे. एक्चुअली आपको जब आप कंपनी फॉर्म करते हो, तो उसके अंदर आपको सिर्फ टेक्निकल लोग नहीं चाहिए होते. इट ऑलवेज गुड, इट शुड बी अ वेल मिक्सचर. सही है? आपको बिजनेस के लोग हों, साथ आपके जो दूसरे एटलीस्ट कुछ मार्केटिंग के लोग हों, डिस्कस विद देम. सही है? आपको जो एक को फाउंडिंग टीम होनी चाहिए, जो आपके फाउंडर्स होने चाहिए, और वो बड़े मिक्स डाइवर्सिफाइड होने चाहिए. पहली बात ये. दूसरी बात ये है कि for example, I also look older than what like I am not that old. तो होता ये है कि I am the youngest in my co-founders. So होता ये है कि जब हम उसमें करते हैं, तो हम थोड़ा सा जो एजेड लोगों से, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनसे हम थोड़ा सा भागते हैं. हमारे जितने भी जो को-फाउंडर्स हैं, या यंग जनरेशन है, वो स्टार्टअप करने से पहले, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर. ठीक है? एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एक इंसान टू बिकम अ CEO, वो अच्छा टेक्निकल
भी नहीं हो सकता, लाजमी नहीं है कि वो अच्छा टेक्नोलॉजी के अंदर भी अच्छा हो, बिजनेस के अंदर भी अच्छा हो, वो मार्केटिंग के अंदर भी अच्छा हो, ठीक है। तो यू मस्ट हैव वेरी मिक्सड अप द टीम, पहली चीज ये है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि डेफिनेटली के कॉन्सेप्ट जो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का, वो थोड़ा सा काफी लोगों के अंदर इज नॉट मैच्योर। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक मोस्ट ऑफ पीपल थिंक लाइक एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट, अ सक्सेसफुल कंपनी इज दैट कि 10 बच्चे बैठे हैं, वी विल गो इन द ऑफिस, वो खड़े हो जाएंगे, सलाम करेंगे, एंड देन वी विल फील बिग और हम बॉस हैं, और दैट इज एक्चुअली रियल डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। होता क्या है कि दे स्ट्रगल करने के बाद कहीं से थोड़ा बहुत फंड्स अरेंज किए, कुछ किया, 10-5 बच्चे बिठा लिए, ऑफिस गए, वो खड़े होकर सलाम किया, दे फील कि यार बस अब हम तो सक्सेसफुल हो गए नाउ, मतलब उसके बाद दे स्टॉप एफर्ट्स। सही है। तो उसके रिजल्ट क्या होता है कि वो बेसिकली जो फेलियर या फॉल डाउन हो जाता है। तीसरी एक चीज ये होती है कि जो आई ऑल्सो फील कि आपका जो कनेक्शन है आपके जो आपका कस्टमर है एंड यूजर है उसके साथ बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिलीव होता है कि यार आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज जस्ट लाइक योर बेबी, मतलब इमोशनली यू शुड बी वेरी अटैच्ड विद योर प्रोडक्ट। उसमें मैं एक चीज कहूंगा, ठीक है यार, इमोशनल यू मस्ट बी इमोशनली अटैच विद योर प्रोडक्ट, बट वो उसको डोंट कंसीडर इट एज योर बेबी। द प्रॉब्लम इज दैट अगर मेरा बच्चा है, उसको कोई क्रिटिसाइज करेगा, आई विल फाइट, आई विल डोंट लाइक इट, ठीक है। प्रोडक्ट को एटलीस्ट वी हैव टू कीप अ लिटिल बिट ऑन अ डिस्टेंस, ताकि कल उसको कोई क्रिटिसाइज करता है, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइज हम उसको गुस्सा करें, हम उससे लड़ें, उसको एब्जॉर्ब करें, उसको अंडरस्टैंड करें, ट्राई टू डिफेंड। अगर हम डिफेंड नहीं कर सकते, गो बैक, स्टडी करो, देखो कि क्या उसके वीकनेसेस हैं, एंड देन कम अप विद सम स्ट्रांग आइडिया। सो ये चीज होता है कि यू शुड बी वेरी अडॉप्टिव, कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है और आपने किसी को इजाजत नहीं है वो उसके बारे में कोई मतलब उसके खिलाफ कोई एक पॉइंट भी रेज करे या उसके खिलाफ आपसे पूछे, आप गुस्सा हो जाते हो। तो दूसरी बात ये है कि यू मस्ट बी लाइक यू कैन से, इतना ना हो कि बस मैंने यही करना है, बस ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो एक वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अच्छा फोर्थ जो चीज मैंने रियलाइज की है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे एक वो कहते हैं ना कि जाली डॉक्टर फेक बड़े मशहूर हैं, उसके बाद जाली पीर जिस तरह से मशहूर हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे जाली जो है ना कि फेक मेंटोर्स और इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एंड टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब कम यंगस्टर बच्चों का, जिससे क्या होता है कि वो फेड अप और दे गिव अप दिस लाइन। सो यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन सिलेक्टिंग कि यार आप किसी को, आप साथ मेंटोर ले रहे हो, आप किसी के साथ डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी लाइक केयरफुल कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लग रही हो। आई थिंक ये 4-5 पॉइंट्स हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इनको फॉलो करें तो आपका फेलियर को खत्म नहीं किया जा सकता, मे बी उसके चांसेस को रिड्यूस किया जा सके। Thank you so much. Yeah, Yeah, go ahead. I just want to add to that. Shahrukh brought up a very good point. Mentors में, I wouldn't say fake, लेकिन होता ये कि हर किसी इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस होता है, राइट? और वो चाहता है कि उसको फिट करे उस बेचारे एंटरप्रेन्योर के साथ जिसका बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो वो अपनी मे बी इज गिविंग एन ऑनेस्ट एडवाइस, लेकिन क्योंकि उसको पता नहीं है, वो अपने डोमेन से आ रहा होता है, और वो ही मे पुट हिम ऑन ए रॉन्ग ट्रैक which results in destruction, जिस तरह के शाहरुख ने कहा। So ये सिर्फ यूएस पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं, यूएस के अंदर भी बहुत है। इसी तरह इन्वेस्टर्स का ही होता है। जब भी हम फंड रेजिंग करते थे, so we probably meet around 60-70 investors before we close the round. लेकिन अब उस 60-70 इन्वेस्टर्स में से 30% जो थे, वो जब वो हमारे साथ मीटिंग में आते थे, they knew they're not going to invest. ठीक है ना? वो सिर्फ इसलिए आते थे, दे वांटेड टू लर्न कि हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, या उनकी पोर्टफोलियो कंपनीज में हमारे कंपैरेटर्स होते थे, तो वो उनके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आते थे, राइट? तो आप उसे कह सकते हैं कि वो दे वर फेक इन्वेस्टर्स, लेकिन इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू हैव टू डील विद देम। तो शाहरुख ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। In addition to that, just as an entrepreneur, just don't get discouraged, or you need to do your own research, and आप मशवरा सबसे लें, ठीक है, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च, आपकी अपनी स्टडी, आपकी अपनी डायरेक्शन है जो आपने फॉलो करनी है। I'd just like to add a point, right? So I'm very happy, Fahad and Shahrukh, आप लोग मेरी लाइफ बहुत आसान कर रहे हैं, because I am one of those जो कि ट्रेन करते हैं यंग entrepreneurs को, right? Especially पाकिस्तानी founders को।
तो बहुत जल्दी में दौड़ लग रही होती है, बस इन्वेस्टमेंट रेज कर लें किसी भी तरह। बूट स्ट्रैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फहद जो नेक्स्ट राउंड में, आई नो कि मौजमा वांट्स टू टॉक अबाउट सम टेक क्वेश्चंस एज वेल, बट नेक्स्ट राउंड में आई डू वांट टू आस्क यू कि $30,000 वाज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू रेज्ड, राइट? एंड हियर यहाँ पे काफ़ी दफ़ा इंप्रेशन होता है कि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बट मैं ज़रूर आपसे मालूम करना चाहूँगी कि $30,000 को कैसे, हाउ डिड यू मेक इट लास्ट, हाउ डिड यू यूटिलाइज इट प्रॉपरली, that you were able to grow the company, right? So that I think आपसे हम strategy पूछेंगे। दूसरा जो point आपका है जो बहुत valid है कि at the end of the day आपने filter through करनी है। जो भी information आ रही है, you know, even अगर वो best possible intention से वो information आपके पास आई है, you have to filter through, right? So you have to have that sensibility to filter through. Anyway, okay, sorry Mosma, go ahead. No, I think this is all relevant. I think startup journey के अंदर all the advice जो आप दोनों ने share की फहद and शाहरुख, I think it's very very useful. थोड़ा सा switch करना चाहूँगी towards the technology aspect of it क्योंकि हमारी audience भी technology से related है. So any one of you, if you want to take that, but what is the role of technology in your startup and what type of technology, data and things you're using? And I am seeing कि कुछ live question भी इससे related आ रहे हैं. So if you can like explain a little bit more in Caremerge as well as Xylexa कि आप लोग क्या technology के aspects को use करें, आपने AI/ML की पहले बात की, तो what are the different things you're using और उसके क्या skill set required है to get equipped to work in a startup like that? Sure. So maybe I can start, Shahrukh. Yeah, sure. हाँ, तो टेक्नोलॉजी तो है ना, वो तो आपको पता है हर साल इवॉल्व होती है और चेंज होती है। 6 years बैक इट वाज वेरी डिफरेंट। हमारा जो चैलेंज था वो ये था कि वी वर डीलिंग विद ओल्डर एडल्ट्स, यू नो, जिनको टेक्नोलॉजी ज़्यादा टेक सेवी नहीं थे। तो जब हमने उनको अपना सॉफ्टवेयर ब्राउज़र पे दिया तो वो ब्राउज़र नहीं यूज़ कर सकते थे। हमने जब उनको मोबाइल ऐप्स बना के दी तो वो लॉग इन करना भूल जाते थे, पासवर्ड नहीं याद आता था। उनको हमने फेस आईडी, टच आईडीज दे दी, उसके बावजूद भी मसला ज़्यादा हल नहीं हुआ। तो फिर हमने उनको अलेक्सा और स्मार्ट स्पीकर्स दे दिए, राइट? तो उससे थोड़ा सा मसला हल हो गया, नाउ दे आर मच बेटर। लेकिन अब जो हमारा जो नेक्स्ट जिसमें हम काम कर रहे हैं और हमने भी कुछ उसके पीसेस लॉन्च किए हैं, वो है कुछ एआई के पीसेस हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप अलेक्सा के साथ बातचीत कर रहे हैं और आप अलेक्सा से पूछते हैं कि अलेक्सा what are the activities today, या पूछते हैं कि अलेक्सा what time is yoga, तो अब अलेक्सा जो है इट्स वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन तो समझ लेगा, लेकिन जवाब देते वक्त इट्स नॉट स्मार्ट। इट कैन जस्ट से सॉरी देयर इज नो योगा टुडे, राइट? एंड दैट्स एन एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। सो वी डोंट वांट दैट। सो व्हाट वी डू इज दैट वी यूज एआई टू मेक सम रिकमेंडेशंस। तो हम इस तरह कहते हैं कि अगर योगा कोई नहीं है आज इवेंट, so it finds out what's the other event that's close to yoga, right? And then it makes those real-time suggestions and recommendations. तो कुछ AI की जो pieces है उसको हमने system में incorporate कर दिया। So it also got Amazon very excited about what we are doing. So now we have a very solid partnership with Amazon. We work closely with them, and we are launching new products on Alexa. Or अभी just Amazon just sent us 2,000 Alexa devices, or जिसको हमने we have to send it to seniors. So that partnership worked out really well. But the technology, kept evolving, from time to time, starting from web browser, or today it's Alexa and smart speakers. Thank you. ओके, बिल्कुल सही कहा फहद ने। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा। अच्छा, बिफोर लाइक टेक्नोलॉजी का रोल हेल्थ केयर के अंदर, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक सबसे बड़ी जो मिथ है हेल्थ केयर के अंदर, जो कि है कि यार शायद ये एआई या जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये इस टेक्नोलॉजी का आने का मकसद ये है कि दे विल रिप्लेस द डॉक्टर्स, नर्सेज या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को, ये द टेक्नोलॉजी इज कमिंग टू रिप्लेस देम, जो कि बहुत बड़ी मिथ है। आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है ये किसी को रिप्लेस करने नहीं आ रही, ठीक है? टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो ह्यूमन लिमिटेशंस हैं उसको रिड्यूस किया जाए, ताकि ह्यूमन एफिशिएंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए। दिस विल हेल्प देम, जो कि उनकी कैपेबिलिटी को डेफिनेटली इनहांस करने के लिए है। सेकंड इज के क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज ग्लोबली इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो विद लेट्स सपोज अगर एक डॉक्टर एक दिन में 10 पेशेंट्स को देखता है, तो वी हैव टू यूज अ टेक्नोलॉजी असिस्ट द डॉक्टर कि वो एक दिन में 100 पेशेंट्स को देख सके, क्योंकि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है।
जो ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो अच्छे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं या अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो बहुत कम है। तो बेसिकली हेल्थ केयर जो टेक्नोलॉजी है उसका जो मेन फोकस है वो असिस्ट करना है दोनों को, मतलब नर्सेज वो पूरे इकोसिस्टम के अंदर असिस्ट करना है। अच्छा, दूसरा Xylexa के अंदर मैं अगर थोड़ा सा बात बताऊं कि हम लोग जो है कि काम कर रहे हैं प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, हम लोग काम कर रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, क्योंकि हमारे बैकएंड के ऊपर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स हमें तकरीबन 2.5-3 साल लगे हैं, जिसके अंदर हमारे PhDs, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमारे AI इंजीनियर्स जिन्होंने काफ़ी मेहनत दिन रात काम किया है, और दिन मतलब अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि हमारे जो मतलब AI के एल्गोरिदम इतने कैपेबल, इतने ट्रेंड हैं कि वो एक सेटिस्फैक्ट्री एक्यूरेसी के साथ एटलीस्ट वो मैथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फर्दर मैथ्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि मैथ्स बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। तो मेन हम लोग जो फोकस करते हैं हम लोग वो AI साइड के ऊपर करते हैं। अलॉन्ग द AI साइड डेफिनेटली क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ अभी हम लोगों का, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस जितने भी डायकॉम व्यूअर या जितने भी इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं वो मोस्टली डेस्कटॉप बेस्ड। उधर रेडियोलॉजिस्ट जाता है, अपनी सीट पे बैठता है, एक अच्छा खासा हैवी सिस्टम मशीन पड़ी होती है, उसके ऊपर बैठ के वो उसको यूज करता है। तो हम इसको क्या करें, हम लोग भी इसको क्लाउड बेस्ड के ऊपर ले गए हैं। हम लोगों ने प्रोसेस को डिवाइड कर दिया है, जितना भी मेन जो प्रोसेस है वो हम क्लाउड पे करते हैं, जो कि लो लाइक प्रोसेसिंग स्पीड के प्रोसेस हैं उनको हम बेसिकली डिवाइस पे करते हैं। तो प्रॉब्लम अब वो क्या होता है कि आप यू आर मूविंग, तो आप क्या करते हैं टैब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर भी आप वो सारी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आपको बेसिकली अब किसी सिस्टम के ऊपर बैठ के उसको जो है ना कि यूज करने की जरूरत, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट OS इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, अलॉन्ग विद AI सो डेफिनेटली लाइक बायोइन्फॉर्मेटिक्स जिस तरह से बूम कर रही है, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जिस तरह से न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, जेनेटिक्स की, सीक्वेंसिंग की, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की, और डेफिनेटली बिकॉज इतना बिग डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो जनरेट हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो लाइक यू कैन से वेरी हॉट केक फॉर अस। सो इसी के साथ हम लोग अपनी वही हेल्थ केयर की कैपेबिलिटीज को AI को यूज करते हुए we also have bioinformaticians in our team जो कि बायोलॉजिकल पाथवेज को स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल पाइपलाइंस को डेवलप कर रहे हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ बायोलॉजिकल मार्कर्स के ऊपर हम लोग ट्रेन करते हैं AI मशीन लर्निंग के मॉडल्स, जो कि हम बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीजेस को। So, like techniques, like particularly AI, and it's a combination of different technology stacks, and जो कि ना सिर्फ Xylexa, मेरे ख्याल में Xylexa जैसे बहुत से स्टार्टअप्स के अंदर अच्छा खासा और काफी हेल्पफुल रोल प्ले कर रहे हैं। थैंक यू। आई थिंक काफी एक लाइव कमेंट मैं लेना चाहूंगी, आई थिंक इसी से रिलेटेड है। somebody is asking, actually Aisha Zafar is asking कि हमारा can we find national data set of breast cancer patients in Pakistan, and what is your advice to solve problem through AI and find data? So I think इनका problem mainly data से related है कि वो data कहाँ से लें अगर if they want to solve something similar, and how are you getting your data basically? So if you can answer that. Okay. वेल आई थिंक वो जो है कि अभी हम लोग चैलेंजेस पाकिस्तान के, डेफिनेटली आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। सो डेटा हेल्थ केयर का और पर्टिकुलर ब्रेस्ट मैमोग्राम्स, बिकॉज जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो ये डाटा एक्सेस पाकिस्तान से अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है इस डोमेन के अंदर। सो हम लोगों ने जो इसको कोलैबोरेशंस हैं हमारी UK और US और पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स के साथ, हम बेसिकली हमारे थ्रू कोलैबोरेशंस हमें एनोनिमाइज्ड डाटा हमें मिलता है, विच आर एक्चुअली बायोप्सी प्रूवन डाटा सेट। तो बेसिकली हम उसके साथ प्ले करते हैं। ऑनलाइन यू कैन से कि कुछ डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, बट उनका जो है कि नंबर बहुत लिमिटेड है, और जो कि आप लोग एटलीस्ट कुछ बेसिक मॉडल और कुछ बेसिक अपने आर्किटेक्चर्स को आप टेस्ट कर सकते हैं। बट टू डेवलप अ प्रोडक्ट यू नीड सम हैवी अमाउंट और गुड अमाउंट ऑफ डाटा, जो कि पाकिस्तान के अंदर लिटिल बिट डिफिकल्ट। बट उसके लिए अगर इफ़ यू आर रिसर्चर, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए किसी हॉस्पिटल के साथ, या अगर आप किसी इंडस्ट्री या स्टार्टअप के साथ हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है किसी हॉस्पिटल के साथ, जिनके पास अब ऑलरेडी जो कि अब डाटा सेव कर रहे हैं। तो अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस डाटा।
ठीक है, थैंक यू। आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल कि अगर वो इफ देयर सम कोलैबोरेशन दे कैन डू तो दैट विल बी यूजफुल। मेरा 2006 का एक्सपीरियंस है एफआईसी के साथ, जहाँ पे हार्ट अटैक डिटेक्शन के अंदर हमने डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की थी। इट वाज रियली रियली पेनफुल। तो पर्सनली आई टोटली एग्री कि दोनों बातें जो आपने की, एक ये कि डॉक्टर्स को ये दे फेल्ट लाइक कि हम शायद रिप्लेस कर देंगे टेक्नोलॉजी से उनकी टेक के साथ, और दूसरा ये कि दे वर वन ऑफ द जो डेटा प्राइवेसी इश्यूज हैं उसको कैसे आप एनोनिमाइज कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उस वक्त हमने यूएस हार्ट एसोसिएशन का सारा जो डेटा है, जो कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हमने वो लिया था। तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन। सो आई थिंक यू गॉट योर आंसर। एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, हसनैन अजमल पूछ रहे हैं अबाउट एआई। एआई का अगेन उनका भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि माय क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट गुड डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्री, राइट? सो अगर किसी और के पास कोई एडिशनल स्ट्रैटेजीज हैं, फहद एंड मौजमा, शाहरुख, सो मे बी वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। देखिए, डेटा जो है ना हेल्थ केयर में तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, अनलेस के आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, अनलेस के आपकी पार्टनरशिप्स हैं। जितने स्टार्टअप्स को मैं यूएस में देख रहा हूँ, इंटरेस्टिंगली 3 स्टार्टअप्स आई नो इन यूएस जो कि एमएल पे काम कर रहे हैं, डेटा ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया पाकिस्तान से डेटा लेके, क्योंकि या मिडल ईस्ट से उन्होंने डेटा लिया, क्योंकि वहाँ से उनके लिए इट वाज मच इजियर टू गेट द डेटा। और जब एक दफ़ा उनके मॉडल थोड़े से ट्रेन हो गए, देन दे स्टार्टेड सेलिंग इनटू यूएस एंड एक्वायर डेटा। सो द क्वेश्चन इज कि डेटा कहाँ से लिया जाए। सो इट रियली इट्स अपॉन द एंटरप्रेन्योर्स के व्हाट टाइप ऑफ डेटा दे नीड, ठीक है ना, एंड देन जस्ट परस्यू इट। अगर वो जैसे उनको ट्रैफिक का डेटा चाहिए, तो फिगर आउट कि कौन सी अथॉरिटीज है ट्रैफिक की, और अपने सारे कॉन्टेक्ट यूज करें। यू नो, जस्ट यू विल बी सरप्राइज के how you can just navigate the system and get what you want. At least this time पे लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि आप डेटा से क्या कर सकते हैं, तो people may be more open to giving it to you. 5 years from now, it will be a little different story. I think Xylexa भी कुछ ऐसी अप्रोच, आपकी अप्रोच भी सिमिलर है शाहरुख in terms of data gathering? एग्जैक्टली क्योंकि शुरू के अंदर तो टू बी ऑनेस्ट, मतलब पाकिस्तान के अंदर जाते थे तो मतलब जो है कि हम लोग की मेंटालिटी के हमें कोई सीरियस नहीं लेता था। उनके शायद ये कोई बच्चे हैं, ये हफ्ता 10 दिन का इनका शौक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लकीली अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी कुछ कोलैबोरेशंस हुई यूएस के अंदर, इनिशियली हमें कुछ डाटा आना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने बेसिक्स मॉडल डेवलप किए, हमने बेसिक मॉडल डेवलप किए, तो फिर हम यहाँ लोकल गए, हमने उनको दिखाया एक वर्किंग डेमो, या देन उनको रियलाइज हुआ उसके बाद कि यार दे आर लिटिल बिट सीरियस। एंड उसके बाद कुछ हमने जो प्रोजेक्शंस अवार्ड्स और हम लोगों ने कुछ कुछ माइलस्टोन्स अचीव किए बहुत कम टाइम के अंदर, उससे जो हमें एक सोशल मीडिया और टीवी मीडिया के ऊपर जो प्रोजेक्शन मिली, थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर हम लोगों की ब्रांडिंग एक डेवलप हो गई एज अ ब्रेस्ट कैंसर कंपनी। थोड़ा सा उसके बाद जब क्रेडिबिलिटी हम लोगों की जब थोड़ी सी बन गई मार्केट के अंदर, तो अब हमारे लिए वो थोड़ा सा मतलब के दे लिसन। अब सबसे बड़ा चैलेंज, अब दे आर ऑल्सो विलिंग टू गिव डाटा। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डाटा स्टोरिंग की जो सेंट्रलाइज डाटा स्टोरिंग की लाइक टैक्स सिस्टम, ठीक है, या ईएमआर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, ये बहुत देर से अडॉप्ट हुए हैं, सही है। अब एक तो बहुत देर से अडॉप्ट हुए हैं, दूसरा इनका सबसे बड़ा, उससे पहले क्या करते थे कि और दूसरा अगर कहीं है भी सही तो वो हार्डली 2 साल या 3 साल पुराना डाटा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर पीएक्स के अंदर डाटा है भी सही तो एक्चुअली वो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर पड़ा है। अब उस सारे डाटा को इकट्ठा करना विद देयर रिपोर्ट्स, दैट इज आल्सो इटसेल्फ अ ह्यूज प्रोजेक्ट। तो जो कि अगेन इफ यू गेट द एक्सेस, अगेन यू हैव अनदर चैलेंज, हाउ यू विल गेट दैट, हाउ यू विल एनालाइज दैट डाटा, how you can say transfer that data from their systems to your systems. So yeah, so first at least you need to get some basic data, maybe वो open source मिल जाता होता है, few hundred examples, train something, एक थोड़ा सा develop some credibility. I think just like I think investment raise करना थोड़ा सा आसान है as compared to healthcare का data acquire करना. So I think for investment, as Fahad said, they met 16 investors. I think instead of 60, 120 hospitals को visit करें, maybe एक या दो आपको कुछ डाटा दे देंगे। Oh wow, that's a big challenge. But again, perseverance की बात आ जाती है, जो हम अभी बात भी कर रहे थे कि लगे रहना है, you know, if you want to do, if you want to pursue entrepreneurship. अच्छा, सना शेख का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है, वो कह रही है कि कोई एडवाइस है कि किसी डॉक्टर के लिए जो कि fed up है of the wrong with the wrong system and the way medicine is practiced. She's a doctor herself
and she wants to enter the tech field to reboot healthcare system, जो कि patients के लिए भी helpful होगा और healthcare workers के लिए भी. So who would like to answer that? Mozma भी आप भी answer कर सकती हैं ये question. I'll take a stab, but then Mosma, you can chime in. I think there couldn't be any better times for doctors, क्योंकि technology already जो है वो आपको काफी ज़्यादा opportunities दे रही है अब, compared to any time in the past. For instance, you can be a doctor at home and provide services through telemedicine. Even if you are in US, whenever we need any doctor advice, we just use a doctor on demand. This is an app. इस तरह पाकिस्तान के अंदर सेहत कहानी, they're doing great job work. You can be part of their network and you can get work while sitting at home. So for doctors, and then there are other services like Marham and other companies which, where if you have a good profile, you don't have to be established popular doctor in Pakistan, so, providing services for 30 years. If you have a good profile, Marham will give you leads. People will come and make appointments for you. So now you don't have to be part of the big healthcare system. Also, you can be a small doctor's office and have a good profile and good ratings, and you can get customers. So I think for doctors now, they just need to be very creative. They can provide their service. Their services are much needed. So uska to koi, there's no second thought about that. Now it's up to them how they want to deliver their services. They can be part of those healthcare systems, or they can use these technology companies and services to deliver their services. आई थिंक जो आप बातें कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रही हैं. ठीक है, डेटा कलेक्शन इज़ वेरी पेनफुल, कलेक्टिंग डेटा इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन हेल्थ केयर. आई थिंक सारे के सारे जो है हमारे साथ अग्री कर रहे हैं. ठीक है, बट वंस अगेन आई थिंक एक क्वेश्चन जो फहद आपसे पर्टिकुलरली, ठीक है, जो फंड रेजिंग वाला था, ये $30,000 आपने फर्स्ट टाइम अराउंड रेज किए थे, कितना टाइम लगा था आपको रेज करने में? व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू थिंक मेड यू स्टैंड आउट, जिसकी वजह से फंड रेज आपने कर लिया था? एंड उसको आपने कैसे, हाउ डिड यू मेक इट लास्ट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, राइट? श्योर. देखिए, जो आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिलती है ना, इट कम्स फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. क्योंकि देखिए, यू आर डूइंग द स्टार्टअप, नो वन नोज यू बेटर देन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. And if you are not a good storyteller, if you cannot convince your friends and families and people that know you for 10, 15, 20 years, then there's a very little chance that you will be able to convince other investors. So the advice always is that the first round is from your family and friends, right? और जब the second investor भी जब आप में आता है next round के अंदर, he also looks at it and says कि इसकी बहन ने, इसके भाई ने, इसके अंकल ने, इसके father-in-law ने invest किया. They mean business. They're very serious. So that was the same case with us. We raised the first round with through our network. जो मेरा co-founder थे, उनके network से, and हमारी अपनी जो savings थी. So we used that as the first round, $30,000. किया क्या उसका? हमारा गोल ये था कि हम प्रोटोटाइप बनाएं और एटलीस्ट किसी कस्टमर को साइन अप कर लें इस $30,000 में, राइट? जो कि बहुत बड़ी अंडरटेकिंग थी. खासतौर पे आपको पता है हेल्थ केयर के अंदर, यूएस के अंदर, इट हैज़ टू बी HIPAA कंप्लाइंट और आपको काफ़ी कंप्लाइंस भी मीट करनी पड़ती है. तो उस पर हमने काफ़ी रिसर्च की कि कैसे इसको करें, क्योंकि पैसे कम थे और गोल बड़ा ज़्यादा था और कम से कम 1 साल हमने इस पे काम करना था. So the way we worked out was that I worked in Lahore. I knew a lot of people in Lahore, so I thought I'll just go and ask them to build the software. So again, it didn't work out. जिन लोगों को मैंने contact किया अपने network के अंदर, they came up with a hefty price, so that obviously didn't work out. लेकिन we went with the merit, so we found this one company out of Islamabad, who was a young company. उसका भी it's more like a startup, and he loved the idea. And he's mashallah very successful. His name is Barkan, runs a company called Vistec. And he said, what, I really believe in your idea. It's not about the money. Let's do it together. So you give me some shares of the company, and in return, I will give you resources at cost. ठीक है, तो उससे हमें इतने resources हमें इतने price पे दे दिए. लेकिन the key was that he wanted to be part of the mission, and that was enough for us. हमने 1 साल में we built the prototype, we got the first customer interested. And then, then from there it was history. Perfect. Thank you for sharing. A quick question on fundraising from Shahrukh as well. So Shahrukh, आपके केस में पहले भी कोई investment की deals हो रही थी, they didn't really work out. Could you highlight a little bit कि कितना problematic था या नहीं problematic था जो fundraising का आपका process है अब तक?
Okay, fundraising के अंदर to be honest, like sitting in Pakistan और to raise investment वो के थोड़ा सा maybe ज़्यादा challenging होता है क्योंकि थोड़ा सा भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना कि एक कल्चर है इन्वेस्टमेंट का, वो थोड़ा सा सेट कल्चर पाया जाता है कि हम लोग रियल स्टेट के अंदर वी आर मोर कॉन्फिडेंट, बट इन टेक्नोलॉजी के अंदर बिकॉज लोग अंडरस्टैंड नहीं करते और वो रिस्क नहीं लेते इस चीज़ को। अच्छा, दूसरा हमारे शायद हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी कुछ पॉलिसीज को चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर लेके आने के लिए। आई थिंक समर आप मेरे से ज़्यादा बेहतर वो बता सकती हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि पहला हम लोगों ने बेसिकली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रेज की थी, बट उसके साथ कुछ लीगल इश्यूज अटैच थे जो कि हमें प्रॉब्लमेटिक थे कि अगर हम लोग वो एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ट्रांजैक्शंस और कुछ लीगल चैलेंजेस हमें फ्यूचर के अंदर काफ़ी हैवी किस्म के फेस करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमें उसे बैकआउट करना पड़ा। इट वाज लाइक आई थिंक वन ऑफ द टॉप यू कैन से गुड नंबर जितने इन्वेस्टमेंट रेज किए यहाँ पे अक्सर कंपनीज ने। सो इट वाज अमंग टॉप 3 और 4 जो टिकट साइज था। इट वाज वेरी गुड टिकट साइज दैट टाइम एज वेल। सो हमें बैकआउट करना पड़ा कुछ लीगल इश्यूज की वजह से। वो कुछ हमारे पाकिस्तान के पॉलिसीज ऐसी थी और कुछ इन्वेस्टर के साथ कुछ लीगल बाइंडिंग्स थी जिसकी वजह से हमें बैक करना पड़ा। बाकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर टिकट साइज इन्वेस्टमेंट का छोटा है और दे डिमांड लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ इक्विटी अगेंस्ट दैट। सो एक रियल एंटरप्रेन्योर के लिए दैट इज नॉट पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली। सो यहाँ पर्टिकुलरली इन रेजिंग इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, तो ये 2 मेन चैलेंजेस हैं। Okay, thank you, Shahrukh. Yeah, I think जी, we will just go ahead and maybe give us like last few potential hurdles agar aapke hai, if you want to share from Pakistan perspective, Shahrukh and Fahad, if you want to share from global perspective, market ke koi insights, koi key thing jo hamare viewers ke sath if they can remember for some time after this. Yeah, absolutely. I think I have 2 things for startups, but 1 thing for Pakistanis that are living in US. So I'll be very quick. Like if startups, please don't use lack of fundraising as an excuse. You can be very creative. Build your prototypes. Technology is so cheap, so inexpensive कि आप घर पे बैठ के पूरा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और फ्री उसको ऑफर कर सकते हैं। सारी क्लाउड सर्विसेज आपको क्रेडिट्स देते हैं एंड सो ऑन। So please, don't think कि अगर आपके पैसे नहीं है तो you cannot be successful, you cannot launch your startup. जब आप स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, आपको ट्रैक्शन आएगी, आप देखेंगे पैसे आपके पास खुद ही आएंगे। So there will be time and the people wants to invest in you. So just do the right things and things will follow you. Number 2, जो चीज़ पाकिस्तान में मैं अक्सर देखता हूँ जो कि स्टार्टअप नहीं करते, वो ये है कि they don't build a brand. They try to build a technology and so on. किसी को अगर आपके बारे में पता ही नहीं है, राइट, तो आपका नाम नहीं है तो आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी, आपको कस्टमर्स नहीं आएंगे, people will not put you on these articles, आपका बारे में डिस्कशन नहीं होगी। So please put a concrete effort to create a brand, marketing करें, छोटा सा भी काम करें, उसको बहुत हाईलाइट करें। एक चीज़ हमने जो की थी शुरू में जिसने हमें बड़ा हेल्प किया वो ये कि between me and my co-founder we had around 7,000 LinkedIn contacts, right? तो उस वक्त ये ऑप्शन था कि लिंक्डइन से आप एक्सपोर्ट कर सकते थे कॉन्टैक्ट्स, तो हमने वो सारे ईमेल्स एक्सपोर्ट करके उसको अपने मेलचिम्प में डाल दिया। फिर हम हर मंथ जो थी वो ईमेल्स भेजा करते थे, चाहे हमने किसी को हायर किया है, चाहे हमारा कोई कस्टमर आया, कोई नया फीचर रिलीज किया है। लेकिन क्योंकि जब हम वो ईमेल भेजते थे हम 7,000 लोगों को, वो सारे 7,000 लोग जो थे वो हमारे साथ 1 डिग्री कनेक्शन में थे, तो वो बड़े खुश होते थे, वो आगे लोगों को बताते थे। तो वी प्रिटेंडेड टू बी बिगर देन हु वी आर, और उस नेटवर्किंग से हमें बड़ा फायदा हुआ। लोग खुद आए हमारे पास कि आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए तो वी कैन कनेक्ट यू विद दिस पर्सन एंड सो ऑन। तो ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस ऑन दैट। So these are the 2 things for startups, but I want to shift gears. I want to talk a little bit to take this opportunity to address some of my colleagues who Pakistanis who are living in US. देखिए पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे many of them are very successful in their jobs, in their businesses, right? और अगर आप देखें ना जिस तरह हम लोग फंड रेजिंग करते हैं शुक्र खानम के लिए और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, हम बहुत पैसे यूएस से रेज करते हैं, यूके से रेज करते हैं। लेकिन मेरा उनके लिए मैसेज है वो ये कि अगर आप पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं, in addition to helping these charities, you need to help the startups, क्योंकि देखिए वो कम से कम 50 to 100 जॉब्स क्रिएट कर देता है, राइट? और वो 50-100 जॉब्स जो है इट हैज एक्सपोनेंशियल इफेक्ट, राइट? उसकी लर्निंग होती है, ट्रेनिंग होती है, एंड वो जाके 5-6 साल के बाद वो अपनी कंपनीज बनाएगा, राइट?
हमारे केस के अंदर, I'll give you an example and I'll close on that. हमने अगर 20 million रेज किया है in over 5 years, right? हमारी आधी टीम जो थी वो लाहौर में थी, आधी शिकागो में थी. Half of that money, close to 10 to 12 million dollar, was transferred to Pakistan for rent, salaries, and all that stuff, right? So अब सोचें कि इतना आपने फॉरेन एक्सचेंज एक कंपनी ने भेज दिया, which we are very small. अगर हमारी जैसी 100 कंपनीज हों, अगर आपने उनको सपोर्ट किया हो अपने पैसों से और वो उन्होंने अपने स्टार्टअप्स को ग्रो किया हो, तो you can see how much the service you can do to Pakistan, not just in terms of foreign exchange, but also the number of jobs that you have created and the opportunities that you have provided. So people like Atif Awan and others who are trying to do this, they're in Pakistan, they set up a fund. Just invest in their fund. If you don't want to invest in startups directly, he has dedicated his full time to find good startups, help them, guide them, give them the money. And there are many others like Atif Awan today in Pakistan. So my message to professionals and Pakistanis abroad is that please invest in these Pakistani startups, help them, and your little investment will go a very long way. Just to add to that, Fahad, because recently we realized this problem क्योंकि हम बहुत early stage startups के साथ काम करते हैं और उनको especially impact startups के साथ, और ये problem बार बार आती है कि जो early stage investment है, there are very few people who are willing to bank on these startups. So in a way जो आपका message है ना, it's the same message. आपने philanthropy वैसे ही कर रहे थे. So philanthropy meant that money was never going to come back to you. So imagine that same pocket now, instead of giving it to philanthropic initiatives, थोड़ा सा उसका हिस्सा आप जो किसी स्टार्टअप में डाल रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट अ रिटर्न, एंड बी सरप्राइज्ड बाय द मैजिक व्हेन इट एक्चुअली डज, एंड देन नेक्स्ट टाइम अराउंड री इन्वेस्ट दैट मनी, राइट? सो जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका यस रिस्क इज हायर बट द अमाउंट इज स्मॉलर, राइट? सो जस्ट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और स्पेशली फॉर पाकिस्तानी डायस्पोरा, बिकॉज दैट्स द वे दे कैन चेंज. अगर पाकिस्तान को हम देखते हैं ना कि कहाँ से चेंज होगा, दैट इज व्हाट्स गोइंग टू चेंज. हम सारे वक्त यूथ पोटेंशियल की बातें करते रहते हैं कि यंग पीपल हैं, बट लेट्स हार्नेस दैट पोटेंशियल, लेट्स गिव देम दैट दैट विंड अंडर देयर विंग्स, राइट? लेट देम फ्लाई. सो आई थिंक ये बहुत, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट. So same thing for Shahrukh. Shahrukh, what are your key messages? It can be for anybody and everyone, so go ahead. ओके अच्छा, सबसे पहले जो हम ना पाकिस्तान के अंदर जो एक मैंने एक चीज़ नोटिस की है एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर, वी थिंक यार एक तो जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए ये हाई फाई टेक ही होना चाहिए. इट शुड बी टेक. अगर चीज़ें नहीं भी है ना, हम ब्लॉकचेन ये वो चीज़ें घुसा AI घुसा के ना हम कहते हैं इट शुड लुक लाइक बड़ा टेकी किस्म का प्रोडक्ट होना चाहिए. लाजमी नहीं है कि टू जनरेट अ गुड बिजनेस आपको कोई बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट हो, ठीक है? मे बी कि बड़ा सिंपल सा आप इंटीग्रेट करके भी आप मल्टी बिलियन डॉलर आप कर सकते हैं. सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारे मोस्टली जो स्टार्टअप्स करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, टेक्निकल होते हैं, ये अपने कमरे में बैठ जाते हैं, दे खुद से एज्यूम करते हैं कस्टमर ये सोचेगा और डेवलप करना शुरू कर देते हैं. दे डोंट आस्क देयर फ्रेंड्स, दे डोंट आस्क पीपल, ठीक है? दे डोंट आस्क इवन कस्टमर. खुद इमेजिन करते हैं, डेवलप करते हैं. यार हम बाहर किसी को बताएंगे तो हमारा आइडिया चोरी हो जाएगा. 6 महीने 8 महीने साल कमरे में बैठ के डेवलप करते हैं. जब बाद में पता लगता है कि जी इंडस्ट्री में गए तो वहां ऊंट की जरूरत थी और ये लोग गधा बना के चले गए हैं, ठीक है? जो कि इंतहाईली मिसफिट होता है इंडस्ट्री के अंदर. तो वहां मैं हमेशा से एडवाइस करता हूँ कि पहले बात यह है कि जब यू हैव कंसीव सम आइडिया, फर्स्ट डिस्कस विद योर फैमिली. टिका के क्वेश्चंस होंगे, आप डिफेंड नहीं कर सकोगे, फाइन, वो आपको जूते नहीं मारेंगे. थोड़ा सा मतलब गो बैक, स्टडी, ठीक है, होमवर्क करें, देन कम अप. जब आप इस लेवल पे आ जाएं कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बड़ा अच्छा मतलब डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है? सो उससे क्या होता है कि इन सब चीज जितना ज्यादा आप क्रिटिसाइज किया जाता है उतना आपका आइडिया उतना रिफाइन हो रहा होता है. अच्छा, जब आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को बार बार इस तरह से अगेन एंड अगेन, यू गो अगेन एंड अगेन, जब आप उनको कन्विंस करते हैं, तो जब आपके पास पहली जो होती है फ्रेंड एंड फैमिली मनी, प्री सीड मनी आप जिसको कह सकते हैं, तो वो आपके लिए रिलेटिवली इजी हो जाती है. सेकंड, गो टू द एक्सटर्नल, वहां लोगों से डिस्कस करें, वहां लोग आपको आर्गू करें. चीजें आप हमेशा नहीं है कि आप हमेशा डिफेंड कर सकेंगे. मोस्ट ऑफ टाइम आपको आंसर नहीं पता होगा, कम बैक, आप उस पर रिसर्च करें, देन कम अप विद सम सॉल्यूशन. सो फॉर स्टार्टअप्स, तो ये दो चीजें हैं कि कमरे में बैठ के कभी भी कोई प्रोडक्ट ना बनाए. और जरूरी नहीं है कि इसके अंदर बहुत कोई टेक्निकली कोई हाई फाई चीज हो तो बिकेगी. Sometimes it's very basic चीज वो बिक जाती है. and because your startup is an entrepreneurship business is money. If you are getting money from some even very basic code, that's fine.
ठीक है. Secondly, particularly if I talk about the hurdles in healthcare in the Pakistan, I think the hurdle is कि हमारे इस टाइम जितने भी सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं वो काफ़ी एजेड लोग हैं पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर. दे आर सो मतलब सख्त किस्म के इंसान, वो टेक्नोलॉजी से ऐसे भागते हैं. आई डोंट नो उनकी क्या दुश्मनी है टेक्नोलॉजी से, वो इनको क्यों इतना डर लगता है टेक्नोलॉजी से, वो इतना टेक्नोलॉजी को डिस्करेज क्यों करते हैं. सही है. इवन के यंग डॉक्टर आते हैं, दे वांट टू चेंज, दे वांट टू इम्प्लीमेंट न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, वो उसको डिस्करेज करते हैं. आई थिंक हेल्थ केयर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास क्योंकि काफ़ी थोड़े से एजेड लोग बैठे हैं और वो थोड़ा सा रिजिड हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, जो कि टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, अनफॉर्चुनेटली. Okay, thank you very, very much. Muazzma, final comments. No, I think this is perfect. आप लोगों ने अपने ये घंटा हम लोगों के साथ जो टिप्स शेयर की, I think it would be really really useful. आपकी जो learning journeys थी, hurdles थी, data से related, this is all resonated very well with me. I think और जो आपके comments थे Fahad towards the end कि as a Pakistani outside of Pakistan, what can you do? I think ये question बहुत लोग पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? How can we help Pakistan? So I think this is really really good way that you can go back and invest in the startups in Pakistan. और उनको आप जैसे Samar you were saying can give them the wings to fly. तो thank you so much for your time. This was really really great. आप लोग दोनों की companies के बारे में, आपकी journey के बारे में to share this with the audience today, and inshallah we'll be in touch in future and do maybe another session in future. So thank you so much. Great, thank Yes, you. thank for you. having us. So just reiterating that, thank you very, very much, Shahrukh, Fahad. बहुत अच्छा लगा, बहुत sound advice थी, and I'm so glad कि बहुत ही articulately phrased भी थी सबके लिए ताकि सबको समझ आ जाए. And Muazzma, thank you. I cannot thank you enough for being the co-host. So thank you very, very much, all three of you. Thank you guys, and keep up the good work. Take care. Bye. Okay. Okay. All right. Khuda Hafiz.